व्हाट इज एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग मतलब वीडियो को एग्जैक्ट रिएक्शन टाइप नहीं करना वाला, थोड़ा डिस्कशन टाइप भी रहेगा, पॉडकास्ट टाइप, वो भी हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लग रहा है हम लोग को वो सब पे रिएक्ट करके देखेंगे आज। ये फर्मी पैराडॉक्स वाला, इसके 2 पार्ट है। ये कर्क्स कजाट वाला चैनल है, उसमें जाके देखने वाले आज हम लोग। तो उसमें देखते हैं एलियन से रिलेटेड क्या तो भी कुछ बोलने वाला था। एलियंस का तेरे को क्या लगता है कि एलियन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना तू देखा है देखा तो। अरे बट दूसरे प्लेनेट के लिए हम लोग जाएगा तो हम लोग एलियन नहीं रहेगा ना। और अगर आएगा भी तो भी फिजिकल लाइफ फॉर्म क्यों आएगा? अभी हम लोग रोवर्स वो सब भेजते हैं ना, तो आएगा तो भी रोबोट टाइप या ऐसा कुछ सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म में आएगा, कार्बन बेस्ड नहीं आएगा। Are we the only living things in the entire universe? The observable universe is about 90 billion light years in diameter. There are at least 100 billion galaxies, each with 100 to 1000 billion stars. Recently, we've used each with 100 to 1000. 100,000 galaxies each with, ये 1 बिलियन बोला ना? 1000 बिलियन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिलियन है। 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन स्टार, उसका अलग सोलर सिस्टम रहेगा 1 ट्रिलियन का। तो अभी के हिसाब से तो ट्रिलियन में से एक है इंटेलिजेंट लाइफ। Billion stars. Recently, we've learned that planets are very common too. And there are probably trillions and trillions of habitable planets in the universe, which means there should be lots of opportunity for life to develop and exist, right? But where is it? Shouldn't the universe be teeming with spaceships? Let's take a step back. नहीं रहेगा ना? Even if there are alien civilizations in other galaxies, there's no way we'll ever know about them. Basically, everything outside of our direct galactic neighborhood, the so-called local group, is pretty much out of our reach forever because of the expansion of the universe. Even if we had really fast spaceships, it would literally take... जो हम लोग को दिख रहा है, मतलब स्टार्स जो भी है, वो भी हम लोग रीच नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम इतना एक्सपांड होता है कि जब तक हम लोग लाइट ईयर के भी स्पीड में, जो फास्टेस्ट स्पीड एवर रिकॉर्ड जो है, तो भी रीच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी बाहर चले गया रहेगा वो रिंग से। मतलब जो हम लोग इसके लिए जो बिग बैंग का थ्योरी डेवलप हुआ, इसकी वजह से है कि एक्सपांड होते जा रहा है। तो मतलब ब्लास्ट होता तभी क्या होता है कि एक्सपांड होता है ना, दूर जाता है एक दूसरे से सबकी। तो उन लोग का वही रीजनिंग था कि सब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, इसके लिए वो है। और दूर क्यों जा रहा है वो डार्क मैटर उसको बोलता है। तो अभी तक हम लोग को पता नहीं एग्जैक्टली क्या है करके, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं उसको डार्क मैटर नाम देते। एवरी सेकंड कुछ तो हम लोग थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड जो भी देख सकते हैं ना, अभी भी वो हम लोग तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। वो हमेशा जाते ही जाते अपने गैलेक्सी तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट पे जा पाए तो भी। To reach these places, traveling through the emptiest areas in the universe. So let's focus on the Milky Way. The Milky Way is our home galaxy. It consists of up to 400 billion stars. That's a lot of stars, roughly 10,000 for every grain of sand on Earth. There are about 20 billion sun-like stars in the Milky Way, and estimates suggest that a fifth of them have an Earth-sized planet in its habitable. 20 बिलियन स्टार्स है and 1/5 बोला ना, कितना बोला वो? Milky Way, and estimates suggest that a fifth of them have an Earth-sized planet in it. मतलब 20%, 10 बिलियन का 20% मतलब मिलियन है। और जो habitable zone, the area with conditions that enable life to exist. If only 0.1% of those planets harbored life, there would be 1 million planets with life in the Milky Way. But wait, there's more. अपना गैलेक्सी में सिर्फ। The Milky Way is about 13 billion years old. In the beginning, it would not have been a good place for life because things exploded a lot. But after 1 to 2 billion years, the first habitable planets were born. Earth is only 4 billion years old, so there have probably been trillions of chances for life to develop on other planets in the past. If only a single one of them had developed into a space-traveling super civilization, we would have noticed by now. What would such a civilization look like? There are 3 categories. A Type 1 civilization would be able to access the whole energy available on its planet. 0.7 में Type 1 मतलब पूरा अर्थ का रिसोर्सेज, जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है, विंड,
जो फ्यूजन एनर्जी लिखा है नेचर जो पूरा डीपेस्ट अर्थ पूरा एकदम वाटर सब सब वो explode है। सबको अपन यूज कर सकते हैं तो वो टाइप 1 ऐसा 6 टाइप तक डिस्क्राइब किया अभी तक। We're currently around 0.73 on the scale, and we should reach Type 1 sometime in the next couple of hundred years. Couple of Type 2 hundred years. would be a civilization capable of harnessing all of the energy of its home star. This would require some serious science fiction, but it is doable in principle. Concepts like the Dyson sphere, a giant complex surrounding the sun, would be conceivable. पर लोग वो बोल रहे हैं ना कि डायसन स्फीयर मतलब सबको सब टाइप्स को डायसन स्फीयर से ही ये किया तो वैसा नहीं करना चाहिए था। कुछ तो बोलते ना। मैं बोल रहा था तू बोल रहा था। मैं बोल रहा अरे बट डायसन स्फीयर टाइप 2 मतलब जो उन लोग का स्टार है उन लोग का सोलर सिस्टम में जो स्टार रहेगा उसका पूरा एनर्जी उन लोग यूटिलाइज कर सकते हैं सीधा सन सन हम लोग बट हाँ बट एक का ये था कि डायसन स्फीयर अगर टाइप 2 है और कोई और सिविलाइजेशन है तो हम लोग अगर देखते हैं टेलीस्कोप से तो हम लोग को दिखना चाहिए ना डायसन स्फीयर क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बट अभी तक दिखा नहीं हम लोगों को। पर उन लोगों का वे भी अलग रह सकता है ना हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि डायसन स्फीयर का ऐसा कुछ भी छोटे चीज से भी is a civilization that basically controls its whole galaxy and its energy. An alien race this advanced would probably be godlike to us. But why should we be able to see such an alien civilization in the first place? If we were to build generation spaceships that could sustain a population for around 1,000 years, we could colonize the whole galaxy in 2 million years. Sounds like... पता चले थोड़ी चलेगा ओरिजिन क्या इन लोग जब पहुंचेगा इन लोग का स्पीशीज इवॉल्व अलग ही हो वही ना हम लोग का भी थोड़ी ना मालूम है कि ऐसा हम लोग का भी कोई ऐसा थियरीज की हम लोग भी मार्शियन भी था फिर यहाँ से अर्थ पे आया हम लोग अपना हिस्ट्री वॉली का रहता है ना उन लोग का स्पेसशिप रहता है 100 क्या मस्त पिक्चर है long डिज्नी का time. But पिक्चर remember, the Milky Way is huge. So if it takes a couple of million years to colonize the entire 1 million habitable planets in Milky Way सिर्फ अपना गैलेक्सी में और कितना 1000 क्या 1 ट्रिलियन वैसा ये है लोग ग्रुप्स और ग्रुप्स में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं बहुत ज्यादा उसमें से एक अपना इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है ऐसा बोलते हैं ऐसा और भी कितना galaxy, and there are possibly millions, if not billions, of planets that sustain life in the Milky Way, and these other life forms have had considerably more time than we've had, then where are all the aliens? This is the Fermi paradox, and nobody has an answer to it. But we do have some ideas. Let's talk about filters. A filter in this context represents a barrier that is really hard for life to overcome. They come in various degrees of scary. 1. There are great filters and we have passed them. Maybe it is way harder for complex life to develop than we think. The process allowing life to begin hasn't yet been completely figured out and the conditions required may be really complicated. Maybe in the past, the universe was way more hostile and only recently have things cooled down to make complex life possible. This would also mean that we may be unique, or at least one of the first, if not the first, civilization ये in... मेरे को नहीं लग रहा है क्यों क्योंकि ये सादा फिल्टर है था हम लोग जैसा बाकी मतलब हम लोग का इतना ये नहीं लगता है कि ये सब स्टैंड कर सकते हैं कुछ फिल्टर इन लोग बोल रहा है इसके पहले ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं था पर वो हम फिल्टर पास क्या बोला ना कि ये जॉब नहीं तो वो बोला अगर फिल्टर है तो मे बी कोई भी सिविलाइजेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचता रहेगा और मे बी हम लोग ने पास कर दिया बट फिल्टर क्या है वो मालूम नहीं ना अभी तक अच्छा हम लोग ने वो फिल्टर पास कर लिया मे बी अगर पास फिल्टर किधर है वही नहीं मालूम तो हो सकता है हम लोग ने पास किया बट हो सकता है कि हम लोग ने नहीं भी किया क्योंकि अब बोल रहे हैं रोबोट्स वो सब का भी रहेगा तो मे बी वो फिल्टर है बट अपने को पता नहीं क्या है तो इन लोग बोल रहे हैं कि इसके पहले हैबिटेबल नहीं था कोई मोस्ट प्लैनेट्स मे बी अभी आया रहेगा और उसमें से भी इंटेलिजेंट फर्स्ट है the entire universe. 2. There are great filters and they are ahead of us. This one... मतलब आने का बाकी है बट हम लोग को पता नहीं किधर है हम लोग पास किया कि नहीं किया अभी तक वो नहीं would be really bad. Maybe life on our level exists everywhere in the universe, but it gets destroyed when it reaches a certain point, a point that lies ahead of us. For example, awesome future technology exists, but when activated, it destroys the planet. The last words of every advanced civilization would be, "This new device will solve all of our problems once I push this button."
If this is true, then we are closer to the end than the beginning of human existence. Or maybe there is an ancient Type 3 civilization that monitors the universe, and once a civilization is advanced enough, it gets eliminated in an instant. Maybe there is something out there that it would be better not to discover. वॉचिंग अस बोल रही है ना. इन लोग बोल रहे हैं कि मे बी ऐसा सिविलाइजेशन रहेगा कि उन लोग रोक देते हैं ग्रोथ को, कि हम लोग के साथ अगर उतना ग्रो के हुए देखा तो तभी इन लोग वो कर लेगा. तो हम लोग से अगर ऊपर जाएगा पूरा मतलब देख के रख रहे हो अभी सेंस बनता है, मतलब हो सकता है. तो इसके लिए पर वो नहीं इतना नहीं बन रही, क्योंकि अगर मतलब क्यों अगर देख के रोकेगा, हम काम कराने का देखेगा ना, तो ऊपर नहीं जाने का. जब ह्यूमन हिस्ट्री में देखेगा तो काम कराने का देखेगा ना, रोकेगा फुल्ली क्यों वो कर देगा. उन लोगों के पास रोबोट से तो ह्यूमंस यूजलेस है ना. बट तो फिर बढ़ने भी क्यों दे रहे, बढ़ने के भी क्यों दे रहे, खत्म कर देने का ना पहले. हाँ तो बट उन लोग रुका है ना, कि क्योंकि हम लोग वो पहुंच सकता है वो टाइम तक. तो अगर पहुंच गया तो उन लोग बोले हाँ इन लोग ने रोबोट से डिस्कवर कर लिया ये ऐसा ऐसा ऐसा, उसके बाद उन लोग मारेगा. बट उसके पहले हो सकता है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग वो लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं. वही बोल रहा हूँ. There is no way for us to know. One final thought, maybe we're alone. Right now, we have no evidence that there's any life besides us. वो एक और बोल रहा था ना The universe. कि मतलब ह्यूमन जैसा थिंक करते कि हम लोग से मिलने के बाद ऐसा उन लोगों को काम नहीं रहेगा, हम लोग से पर कोई दूसरा एनिमल से मिल के जा सकते हैं. हाँ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं. नील डेग्रास टायसन बोल रहा था कि मे बी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ह्यूमन जैसा था बोला था. बट जो रोगन बोला नहीं हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम लोग देख एंड्स वगैरह सब स्टडी करता ना, तो ऐसा सोचेगा तो इंटरेस्टिंग नहीं है. बट एक्चुअल में जो इंटरेस्टिंग दूसरे लोग को नहीं लगता वो मे बी किसी और को लगता रहेगा, और उन लोग जाके रिसर्च और वो सब करता रहेगा. तो क्योंकि जो ये जो रोगन बोलते हैं इंटरेस्टिंग है और आना चाहिए, बट नहीं आया ना अभी तक. ऐसा सोच रहे हम लोग. मे बी आके गया रहेगा, मे बी ऑक्टोपस से मिलने को आया रहेगा, ऑक्टोपस से मिल के चला गया रहेगा, हम लोगों को क्या पता. Appears to be empty and dead. No one sending us messages, no one answering our calls. We may be completely alone, trapped on a tiny moist mud ball in an eternal universe. Does that thought scare you? If it does, you're having the correct emotional reaction. If we let life on this planet die, perhaps there will be no life left in the universe. Life will be gone, maybe forever. If this is the case, we just have to venture to the stars and become. तो ऐसा बहुत सारा सिविलाइजेशन ने खुद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया रहेगा ना. वॉली में भी वही तो था. हाँ पर उन लोग दूसरे जगह पे हैबिटेट कर सकते हैं ना. उन लोग पर बहुत सारे लोग का तो कैलिबर नहीं रहेगा उतना, मतलब प्लैनेट्स का जो भी. वही बोल रहे वो फिल्टर किधर है वो पता नहीं हम लोग अभी तक. The first Type 3 civilization to keep the delicate flame of life existing and to spread it until the universe breathes its final breath and vanishes into oblivion. The universe is too beautiful not to be experienced by someone. This video was made possible by your support. नेक्स्ट वीडियो ना, इसका दो पार्ट है. There are probably 10,000 stars for every grain of sand on Earth in the observable universe. We know that there might be trillions of planets, so where are all the aliens? This is the Fermi paradox. If you want to know more about it, watch part 1. Here, we look at possible solutions to the Fermi paradox. So, will we be destroyed, or does a glorious future await us? Space travel is hard. Although possible, it's an enormous challenge to travel to other stars. Massive amounts of material have to be put into orbit and assembled. A journey of maybe thousands of years needs to be survived by a population big enough to start from scratch. And the planet might not be as hospitable as it seemed from afar. It was already extremely hard to set up a spaceship that could survive the trip. An interstellar invasion might be impossible to pull off. Also, consider time. The universe is very old. On Earth, there's been life for at least 3.6 billion years. Intelligent human life for about 250,000 years, but only for about a century have we had the technology to communicate over great distances. यही बोल रहा था कि अपने पास नॉलेज इतना कम है ना ह्यूमन हिस्ट्री का, आके गया रहेगा ना तो भी हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा. वही. और कैसा मतलब एकदम पावरफुल जो रहता है उन लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं ना. तो जो भी मतलब क्या ह्यूमंस जो इंटरेक्ट करेगा सिविलाइजेशन रहेगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या ऐसा कुछ भी हो सकता है. मे बी लिख के रखा होगा बट जला दिया. There might have been grand alien empires that stretched across thousands of systems and existed for millions of years, and we might just have missed them. There might be grandiose ruins rotting away on distant worlds.
99% of all species on Earth have died out. It's easy to argue that this will be our fate sooner or later. बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. पहले तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिर सरवाइव करने को आना चाहिए, फिर अरे इससे यार एक राइनो का स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो गया अभी जस्ट एक यही साल में. वही तो. बट मैं क्या बोल रहा है, इंटेलिजेंट रिया तो भी एक पॉइंट पे बोलते शायद ह्यूमन पॉपुलेशन 150 हो गया था पूरे वर्ल्ड में. ह्यूमन 150 था खाली, एक पॉइंट पे इतना ये कम हो गया था. तो सोच अगर इंटेलिजेंट रिया तो भी सरवाइव करने का वो सब. Intelligent life may develop, spread over a few systems, and die off over and over again. But galactic civilizations might never meet, so maybe it's a unifying experience for life in the universe to look at the stars and wonder, where is everyone? But there is no reason to assume aliens are like us or that our logic applies to them. वही तो है. It might मतलब just हम be लोग that का पांच सेंस है ना, हम लोग देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं वो सब, और उन लोग का ऐसा सेंस है कि जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उनमें मतलब अलग ही चीज है कुछ. एक मतलब एकदम अर्थ का जैसा उन लोग मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं अर्थ का, और फिर एकदम अलग स्नेक्स का इंफ्रारेड टाइप है वो सब. नहीं, हीट विजन है, हीट विजन. आउल का इंफ्रारेड है ना. हाँ, रात में देख सकते हैं. नाइट विजन वो सब हम लोग में नहीं है. पर वो क्या आईजी है ना, मतलब देख सकते हैं. वो हम लोग का कैसे, हम लोग जो रेयर है कि हम लोग कैसे फॉर्म हुआ है ना, पर मतलब उन लोग का अलग ही सेंस है कुछ भी. Means of communication are extremely primitive and outdated. Imagine sitting in a house with a Morse code transmitter. You'd keep sending messages, but nobody would answer, and you'd feel pretty lonely. Maybe we're still undetectable for intelligent species, and will remain so until we learn to communicate properly. And even if we met aliens, we might be too different to be able to communicate with them in a meaningful way. Imagine the smartest squirrel you can. No matter how hard you try, you won't be able to explain our society to it. After all, from the squirrel's perspective, a tree is all that a sophisticated intelligence like itself needs to survive. So, humans cutting down whole forests is madness. But we don't destroy forests because we hate squirrels. We just want the resources. The squirrel's wishes and the squirrel's survival are of no concern to us. A Type 3 civilization in need of resources may treat us in a similar way. They might just evaporate our oceans to make collecting whatever they need easier. One of the aliens might think for a second, oh, tiny little apes. What? They build really cute concrete structures. Oh well, now they're dead, before activating warp speed. But if there is a civilization out there that wants to eliminate other species, it's far more likely that it will be motivated by culture rather than by economics. And anyway, it will be more effective to automate the process by constructing the perfect weapon. A self-replicating space probe made from nanomachines. They operate on a molecular level, incredibly fast and deadly, with the power to attack and dismantle anything in an instant. एक था कि इतना छोटा वो नैनोबॉट्स टाइप रहता ना, मे बी वही एग्जिस्ट करेगा और दिखता भी नहीं रहेगा ना, उन लोग इन्वेड भी कर सकता, अपने को पता भी नहीं चलेगा. वो सब भी कर सकता है. और अगर भेज रहे तो रोबोट से भेजेगा ना, खुद क्यों आएगा इनिशियली. You only need to give them 4 instructions. 1. Find a planet with life. 2. Disassemble everything on this planet into its component parts. 3. Use the resources to build new space probes. 4. Repeat. A doomsday machine like this could render a galaxy sterile in a few million years. But why would you fly light years to gather resources or commit genocide? मैं बोल रहा सेंस अलग ही है. इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता रहेगा, पर हम लोग को फील मालूम भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग में वो सेंस करने का है ही नहीं है एबिलिटी. हाँ, ये था. Speed of light is actually not very fast. If someone could travel at the speed of light, it would still take 100,000 years to cross the Milky Way once, and you'll probably travel way slower. There might be way more enjoyable things than destroying civilizations and building empires. An interesting concept is the Matryoshka brain, a megastructure surrounding a star. A computer of such computing power that an entire species could upload their consciousness and exist in a simulated universe. Potentially, अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना aliens. one could experience an eternity of pure ecstasies without ever being bored or sad. A perfect life. If built around a red dwarf, this computer could be powered for up to 10 trillion years. Who would want to conquer the galaxy or make contact with another life form? ये सोच रहा था
अभी फोन में है ना सब लोग देख कैसा मतलब, तो ऐसा में भी वर्चुअल इतना अच्छा वर्चुअल वर्ल्ड है कि रियल वर्ल्ड का जरूरत ही नहीं है। हाँ ये तो सही है। तो उन लोगों को बाहर देने का क्या जरूरत है? सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, ऐसा भी है ना कि हम लोग अपना ब्रेन को भी अपलोड करके रख सकते हैं, और खाली उन लोग का सन का एनर्जी चाहिए उन लोगों को बस, और उन लोग का कितना 10 ट्रिलियन ईयर्स के लिए को रियलिटी बन सकता है, हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है जितना जब भी जो करने का होगा। और बाहर जाना वर्थ ही नहीं है ना इन लोगों के लिए, क्योंकि इतना दूर ट्रैवल करके इतना रिसोर्सेज वेस्ट करके मतलब ही नहीं। If this were an option, all these solutions to the fairy paradox have one problem. We don't know where the borders of technology are. We could be close to the limit or nowhere near it, and super technology awaits us, granting us immortality, transporting us to other galaxies, elevating us to the level of gods. One thing we do have to acknowledge is that we really don't know anything. Humans have spent more than 90% of their existence as hunter-gatherers. 500 years ago, we thought we were the center of the universe. 200 years ago, we stopped using human labor as the main source of energy. 30 years ago, we had apocalyptic weapons pointed at each other because of political disagreements. In the galactic timescale, we are embryos. We've come far, but still have a long way to go. The mindset that we really are the center of the universe is still strong in humans, so it's easy to make arrogant assumptions about life in the universe. But in the end, there's only one way to find out, right? Hey everybody, we've... ओके, तो ये था पूरा वीडियो। ऐसे ही वीडियोस करते रहेंगे हम लोग। मे बी कल पॉडकास्ट टाइप भी कुछ ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब।